Hello today, welcome back to GFX Signal. Sorry for late video, but it was some health issue and busy some other work. Video will become late, but I think next video will not be late because next video is on a strategy that good and strategy that I've created and I'll upload it soon. Let's discuss this one. Like this one, were like named as you said, AI Forex Trading ChatGPT based EA. And this EA work for mostly artificial neural network. Like if you study about anything about neural network, like we can say example of our brain nerve system, like it's take input from different indicators and different scenarios and integrate it and then make a decision. Okay, it's a complex algo, like multiple algo, not an AI. They like AI intelligence. Nothing is going to be AI because they're just using machine learning and neural network. It's possible, but AI is not possible in MT4 and it's a grid-based trading system that can be sometimes risky. Okay, and it can be also profitable. So we just first use for demo purpose, and after that we use for small capital, and after small capital we'll look for after profitable we look for big capital. Okay, it will work on deep learning algorithm, like they use like trend and momentum and volatility filter, and after analyzing like all of them, like as I already said, yeah, trend like moving average and momentum indicator and volatility filter like ATR and MFI RSI. Okay, and yeah, forecast like it uses like and based on this to make a decision. It also consider the news and also with respect to like USD strength or weakness. It will help to identify it's like make trade or not, because if there is a strong weakness like Dixie, so in simple words, say US dollar index. Okay, yeah, customization, many things are, but you don't need to worry. You just implement it with some risk management. Don't care other thing, and the users like created with using like ChatGPT and part. But I think it also required manual work because I've also tried ChatGPT, but not always they are working. They have some bug. Okay. Everything looks good. Okay, and most of important thing like it worked like for $1,000. Reason behind that because it's a grid system. So if any trade goes in the negative, that it plays again and again trade again and again trade, that trade become like a high number of trade will be open there, and if your negative flow of equity that will be high. That's why we need to around $1,000. It depends on pair also, but most of time it will go around 100. Sorry, 1,000. Others written there. Okay, let's move to platform. Okay, this will look like this. And one more thing, like if you want to download, sorry, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, आप जा सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करेंगे ChatGPT ये, और ये वेबसाइट है जो मैं बता रहा हूँ, ये forex.com, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में कुछ जो आपको कंसीडर करना है. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ना मिस्टेक कर देंगे आप. ठीक है, ये यहाँ पे क्या ये कंसीडर कर रहा है लाइक RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो भी आने वाला था. तो हम बात करते हैं इसके बारे में, इसके डिटेल में बात. चलिए कुछ पॉइंट हाईलाइट करने वाला हूँ. नेम आप जानते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ सपोर्टेड पेयर्स हैं, ये दे दिए गए हैं, कोई इशू नहीं है. इधर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे फोकस हो जाए. और टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट है. ठीक है, ये अगेन ये मेंशन लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ओके, तो AI always consider there is no AI that one work for like MQL4, because AI mostly work with Python, because Python have like a dynamic movement to capture, but other language like they are static language, so they don't have a movement to capture like dynamically. Only Python script have this feature right now, so don't trust anybody. If anybody say like AI, that means they are saying about like machine learning or like simplest combination of multiple like. Okay, I don't want this video too long. Yeah, I will highlight some points like you can try for your purpose. Like I think you don't need to change anything. Like yeah, this one for you if you want like some button to turn on or off, manual trading, and lot sizing. That's important. Just play very important role. Very important. Consider it because always come. Sorry guys. Let's continue. Okay. Take a lot. Okay, we discussed. Now we point out the main point like how change like we take benefited and take a like. There you can choose
like dynamic lot, but I don't recommend. If you test it like $100 and uh, less than 1000, then I will recommend fixed lot. And if you go like 1000, then you can use low risk set file. But I've tested that both. Okay, after that, like you can go depend on your capital. So most of traders like watching a video that belong to be their capital like 1000 and 100 to 1000 that they belong. So I mostly test every expert advisor or indicator for purpose of scalping and low capital. Okay. Rounding method, a different method they are not using because it's false now. Okay, and one more thing, like we also discussed about SL max spread. To use it, you can change it like this. Keep in mind, maximum spread is in pip, not a like in point. So I think it will work most of broker. I think there is no one broker that like spread more than 5 pip for like currency payers. It's possible like if you go for like crypto pair, then there is a high like spread. Okay, now our main point is SL. 1 minute, I'll fixing it. Okay, yeah, that's been also going to be work for like FTM. That I don't check that time, but you can set your FTM daily range and activate this, and it will get like yeah, that one also going to work with hedging, and like that one should be always be false because on a holiday there is a very low volatility that time. I think you will face always loss due to high spread and low volatility. So always keep this off, and like hedging you can try and maximum drawdown action. Like you can set what action you want. Like if you set your maximum drawdown, like the range and what you want action to be taken. Like if you are working for like one, two, if you're working with like a prop firm, then you need to like close trade and stop trading 24 hours. If you're working for like your personal account, and that time you want to like private grids until you will restart the server. Okay, like you can put it like if there is, you have certain loss and certain amount of loss as you put there, and after that you want to stop trading. Till then you restart like terminal. That's a good point because I think that is strategy. First time I seen this one strategy that provide this type. Okay, like drawdown calculations based on account. That's important point. Keep in mind because if you go for like a strategy, then a strategy will decide based on like they have around 1000 according to the minimum, but according to account that will be good risk management. Okay, I don't think other point are you need to be considered. Yeah, that like during your testing, if you want to like optimize your for your own purpose, that time you can change these time. Like I have already recommended you what time you can use like according to Indian. Sorry, no, sorry, मैं भूल गया था भाई. I forgot it. टोकन हिंदी. ओके, बात करते हैं. तो अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम स्टैंडर्ड, तो आपको बताए रात के अराउंड 11:30 11:30 12 बजे बोल सकते हैं. 12 बजे के बाद 2 बजे के लिए मार्केट हो जाता है साइडवेज. ये मेरा बैक टेस्ट किया हुआ है और ये मेरा काफ़ी टाइम हो गया. मैंने इसमें चेक कर लेना आप भी. जो भी टाइम है 12 टू 2 नाइट. ओके, नाइट में ये करूँगा. यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपको इसको चेक करना है साइडवेज मार्केट में. ठीक है, और अगर आपको वॉलेटिलिटी मार्केट में चाहिए, यहाँ पे आपको हाई वॉलेटिलिटी मिले, तो मुझे लगता है आपने काफ़ी लोगों को पता होगा. नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ. तो उसके लिए सही टाइम है, दो उसके टाइम जोन्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम. 12:30, ठीक है, 12:30 टू 4. तो ये एक टाइम जोन है. दूसरा टाइम जोन है 6 PM. 6 PM. अब अगर मैं टाइप करता हूँ यार इधर प्रॉब्लम हो रहा है, बढ़िया नहीं आ रहा है. एक मिनट. 6 PM to around it will be 8 PM is okay. 2 hours, it's good.
Okay. I think everything is done. So I'll upload result. I was working and 3 more points are there. Okay, and these are days you allowed for like trading. You can manage for yourself if you need. And like here you can put your pairs that you want to trade at simultaneously. Yeah, that is multi-pair expert advisor that will take trade on a currency pair. So if you want to trade only one currency pair, then you just need to remove and put like you want to Euro USD. Then it will take trade only Euro USD. If you want a two pair, then just place like JPY USD and gold. Okay, if there is any suffix means like I'll give you example. Like if you see somewhere here, like Euro USD dot like M. Okay, or or in simple you can say if you got like this Euro USD that's ECN. Yeah, dot M, this one dot M and dash ECN is hyphen ECN, that's it, your suffix. Like we will put the your suffix broker like ECN. That is going to retrieve because there is broker that provide two type of account. One is standard, another is ECN. So if your account with ECN type, then in that time you need to mention suffix. Otherwise, it will not open any trade. Okay. Pips mode for that's nothing to be changed. You will change after you get one set file that's profitable and try to create different set file and you can use it. Other thing I do find I use it's a lot of customization though. Now one more feature that I don't think you need to change. Okay, I'll consider next update. Right now it's profitable. Yeah, and that filter you need to be considered. That's most important. Most important point. Okay, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कवर जरूर करना है आपको. ये आपके अकाउंट को ब्लो आउट करने से बचाएगा. ठीक है. एंड क्योंकि यूएस 500 है, S&P 500 है, ये आपको प्रेडिक्ट करेगा यूएस मार्केट इज क्रैश्ड और नॉट. ठीक है. आई थिंक इट्स ऑल डन. देयर नथिंग, everything is okay. And back testing setting, this is automatic, it's for like back testing. जीएमटी डिटेक्शन में आप ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट देगा ये आपको अगर आप टाइम रेंजेस यूज करते हैं. ठीक है. एंड डीएसटी टेस्ट, I think you don't need to mention it. It will, if you use like auto GMT, it will calculate it based on auto GMT feature. If you turn off this, then you need to mention it. Okay, now it's done, and I will backtest it and provide you like how it look like the result. Okay, I'm going to be testing this already. I'm testing on Euro USD and 5 minutes. The spread I'm going to current, because one more thing I'll show you, like current spread for Tickmill, that's 0. Okay, it depends on your broker. I'll upload video. One more thing, it's a very long time frame. I'll show you from 5 years. That will save time. 19 is okay, I think. Okay. So one more thing. Okay, consider to tick value. One point more there. We need to be clear during web testing. Yeah, I'll show you. This one saying always like not enough historical data, not enough data. Ignore it. But right now it's collecting data from analyzing because they are using like loop back. In simple words, they are using a lot of data or backdate for predicting. Like
trend. Here I use a regression model. If you know about regression model जो है उसमें आपको काफ़ी जो हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है उसको हम एनालाइज करते हैं, सेम ट्रेंड निकालते हैं, इसलिए हमें थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। इसलिए अभी ये नॉट इनफ हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है, आप तो इग्नोर कीजिए, हम मिलते हैं आपको रिजल्ट के बाद। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेंदी हो गया फिर भी। ठीक है, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं स्किप करके और आपको मिलेंगे ठीक है रिजल्ट के बाद। ये देखिए वर्किंग हो रही है, ठीक है, तो हम फिर से मिलेंगे, आपको ये थोड़ा स्टार्ट हुआ इसलिए आपको दिखाया। ओके guys, so welcome back to our testing result and I'll just stop it now there and check for yes. चलिए हम देखते हैं रिजल्ट आज का हमारा। तो ग्राफ आप देख सकते हैं, जो स्पाइक आए हैं, ये स्पाइक क्यों आए इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो स्पाइक आने का रीजन है ग्रिड। ओके, रीजन इज ग्रिड सिस्टम। ओके, ग्रिड मेथड is used, grid method used, that's why they are and there is spikes and so that's the reason. And okay, one more thing we will analyze, don't worry, like these are spike. Okay, and also it's not ये फिक्स नहीं है कि ये होगा। चलिए हम बात करते हैं एक मिनट। हाँ रिपोर्ट में तो ये इनिशियल डिपॉजिट 10,000 ओके एंड टोटल नेट प्रॉफिट 465, ये फिक्स लॉट के साथ किया है। हाँ एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, फिक्स लॉट है, फिर ये ग्रेडिंग यूज किया बस फिक्स लॉट के साथ। तो ये ठीक है, मार्टिंगल नहीं यूज किया, मार्टिंगल और परसेंटेज यूज नहीं किया, जैसे अमाउंट इंक्रीज हो रहा था काफी लो रिस्क यूज किया है। तो यहाँ पे ड्रॉ डाउन 18% देखने को मिला है, ठीक है, एंड रिलेटिव ड्रॉ डाउन ऑल्सो 18.97%। ठीक है, दोनों इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज बताता हूँ, शॉर्ट पोजीशन का जो बोल है ठीक है 127, लॉन्ग 25, प्रॉफिट ट्रेड परसेंटेज ऑफ टोटल यानी 231 एंड 131 यानी 63.81% जो प्रॉफिटेबल है। तो एक रेशियो हम चेक करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब हम इस रेशियो की बात करते हैं। मेन चीज़ जो यहाँ पे है वो नोटिस करने वाली है, हाँ ये कुछ नंबर, हाँ एक इधर ये पॉइंट आउट और कीजिए। मिस में चार्ट एरर भी काफ़ी ज़्यादा शो हुआ है यहाँ पे, तो इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी हम श्योर नहीं हो सकते हैं, तो इसको आपको डेमो में फॉरवर्ड टेस्टिंग इसकी कंपलसरी है, विदाउट फॉरवर्ड टेस्टिंग इसको प्लेस नहीं करना है। क्या होगा कंसेक्यूटिव बिन्स, हाँ ये जरूरी इसको करते हैं। तो कंसेक्यूटिव जो बिन्स आया यहाँ पे वो 10 है एंड कंसेक्यूटिव लॉस 7 है। तो ये जो रेशियो है, इसमें का रेशियो अपन निकालता हूँ, विन रेशियो 1.4 it's 1.4 something. 1 minute. Okay, I'll put like you can see here, it will be like 1.4, like yeah, 1.4. Okay, रेशियो कैसे मैटर कर रहा होगा तो ठीक है, यहाँ से एंड यहाँ से हमने रेशियो निकाला 1.4 आ रहा। ये क्या होता है, ये निकल गया प्रॉफिट फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एवरेज चेक भी कर लेते हैं, एवरेज 4 है, कंसेक्यूटिव लॉस 2 है एंड 50% रहा यहाँ पे अनरिसीव्ड हुआ। तो हम देख सकते हैं स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, मोस्ट ऑफ केस में ये आपको प्रॉफिटेबल रखेगी, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड पे मैटर भी करेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पॉइंट मैंने बोले थे उनको ध्यान में रखते हुए पहले इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग पे कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग में इसको प्लेस कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। यूज एज फॉरवर्ड टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग मीन्स डेमो अकाउंट, डेमो टेस्ट ट्रेड। ओके, डेमो ट्रेड कीजिए एंड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। ओके, और ये आपको चाहिए इतना, एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए आपको
करो टेस्टिंग, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, रिजल्ट आपके पॉजिटिव आते हैं आप रियल में यूज करें इसका। चलिए अभी ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो स्ट्रेटजी बेस्ड है, एक्सपर्ट एडवाइजर भी आ सकती है, मैं ट्राई करूँगा स्ट्रेटजी भी। मैंने कुछ स्ट्रेटजी टेस्ट की है जो बेटर स्ट्रेटजी है, तो शेयर करूँगा काफ़ी बेटर। ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगा, इस वीडियो कर दूँगा, डोंट वरी।